Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Starting off with biochemistry, and first of all, we are going to delve into the details of chromatin structure. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक डायग्राम में भी बहुत अच्छे से शो किया हुआ है. दिस इज़ द डीएनए डबल हेलिक्स और these are the strands of DNA जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड एक beads on a string appearance दे रहे हैं. You can see this is the euchromatin, this is the linker histone and this is the heterochromatin. ये एक सारा स्ट्रक्चर उन्होंने दिया हुआ है. अब इसकी डिटेल्स को हम पढ़ते हैं. So, starting off with what is written in the text, DNA exists in the condensed chromatin form to fit into the nucleus. DNA loops twice around the histone octamer to form a nucleosome, which gives beads on a string appearance. So you can already see that DNA दो दफ़ा loop बनाता है around this structure, which is of histone proteins. So वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें हिस्टोन है और डीएनए है, इसमें जो हिस्टोन्स इन्वॉल्व हैं दैट इज H2A, H2B, H3 एंड H4, जबकि जो H1 है it binds to the nucleosome and to linker DNA, thus stabilizing the chromatin fiber. So H1 का पर्पस क्या है कि इसने chromatin fiber को stabilize करना है. It is not a part of the nucleosome structure, right? This needs to be kept in mind. Then they say DNA has negative charge from phosphate groups. We already know that DNA consists of ribose sugar, nucleotide, the bases, the purine or either purine or pyrimidine bases, and the phosphate group. So it is the phosphate groups which gives DNA a net negative charge. Then they say that histones are large and have positive charge from lysine and arginine. अब बेसिकली उन्होंने ये एक बात बताई है कि हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है. इनमें क्या होता है कि एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये टाइटली पैक्ड रहते हैं. हिस्टोन्स में मेनली पॉजिटिव चार्ज कौन प्रोवाइड करता है? द अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन. Now they say DNA and histone synthesis occurs during the S phase. This needs to be kept in mind कि इस फेज ऑफ सेल साइकिल के दौरान डीएनए की भी सिंथेसिस होगी, हिस्टोन की भी सिंथेसिस होगी. Mitochondria have their own DNA which is circular and does not bind histones. So mitochondrial DNA does not bind histones. Heterochromatin. Um, in this structure, this dark colored area is the heterochromatin, right? It is a condensed form of chromatin. It appears darker on electron microscope. This is the nucleolus, and the heterochromatin is sterically inaccessible, thus transcriptionally active. Since it is tightly packed, तो इसकी transcription नहीं होती. The reason behind, because इसके अंदर level of methylation increased होता है और acetylation कम होती है. Now we'll see the details why is it so. अभी थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो इसकी reason भी हम पढ़ लेंगे. Now they say कि heterochromatin is a highly condensed form of chromatin. It is also the hidden chromatin. And what are bar bodies? They are inactive X chromosomes. They may be visible on the periphery of the nucleus. I think यहाँ पर they have shown these are the bar bodies. इसके अलावा let me show you once again कि yes, I think these are the bar bodies. What is euchromatin? Uh, Euchromatin. Let's see what's euchromatin. It is a less condensed form of chromatin and it appears lighter on electron microscope. You can see this entire structure which is appearing white. This is the euchromatin. It is transcriptionally active, means it's sterically accessible. इसकी transcription होगी और फिर further हमारे पास DNA या gene expression होगा. So euchromatin is a true form of chromatin. It is truly transcribed and euchromatin is expressed. What is DNA methylation? Reversible changes that occur in which the sequence of the DNA is not changed. In which the expression of DNA is changed, but the sequence of DNA is not changed. तो DNA methylation में basically हमारे पास क्या होता है कि
डीएनए का सीक्वेंस नहीं चेंज होता, लेकिन वो किस तरह एक्सप्रेस हो रहा है ये चीज़ चेंज हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि डीएनए मिथाइलेशन एक एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है जो कि जीन एक्सप्रेशन को साइलेंस भी कर सकती है, एक्टिवेट भी कर सकती है, लेकिन डीएनए सीक्वेंस को वो सेम ही रहने देगी। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। इसमें क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी डीएनए मिथाइलेशन के थ्रू साइलेंसिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस नहीं चेंज होता। दिस इज वन एग्जांपल। अदर एग्जांपल्स of DNA methylation, they include the aging, carcinogenesis, epigenetics, genomic imprinting, transposable element repression, and X chromosome inactivation. So we see कि carcinogenesis में basically like cancer epigenetics में क्या होता है कि डीएनए हाइपरमेथाइलेशन की वजह से जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं वो साइलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर इट कंटिन्यूज टू प्रोग्रेस, ठीक है। और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में क्या होता है कि इसमें डीएनए मिथाइलेशन के थ्रू एक पेरेंटल एलील साइलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सीक्वेंस नहीं चेंज होता, लेकिन डीएनए जो जीन एक्सप्रेशन है वो ऑल्टर हो जाता है। इसी तरह जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट रिप्रेशन है, व्हाट हैपेंस इन इट, कि इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोजोन्स are the DNA segments which continue to jump from one segment to another. तो लेकिन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट रिप्रेशन में क्या होता है कि डीएनए मिथाइलेशन के थ्रू जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, जो जीनोमिक स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा देयर इज एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द लायनाइजेशन। So we see that DNA is methylated in imprinting. Methylation within the gene promoter, that is the CpG islands, typically represses or silences the gene transcription. CpG methylation makes the DNA mute. So you can, keep this thing in mind कि M से methylation भी होता है, M से DNA, M से mute भी होता है। तो methylation makes DNA mute mostly, ठीक है। And then they say कि dysregulated DNA methylation is implicated in fragile X syndrome. So in this disease, basically we see dysregulated DNA methylation. What is histone methylation? It usually causes reversible transcriptional suppression, but it can also cause activation depending upon the location of methyl groups, ठीक है। हिस्टोन मेथाइलेशन से सप्रेशन भी हो सकती है, एक्टिवेशन भी हो सकती है on the basis of location of methyl groups. So histone methylation also, it mostly makes DNA mute. Lysine and arginine residues of histones can be methylated. What is histone acetylation? Now, what happens in acetylation? There is removal of the histones positive charge. तो इसमें क्या होता है कि हिस्टोन्स का सिंस पॉजिटिव चार्ज जब रिमूव कर दिया जाएगा तो वो जो एक अट्रैक्शन थी जिसकी वजह से एक कंडेंस्ड और टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर बना हुआ था डीएनए और हिस्टोन्स का, वो थोड़ा लैक्स हो जाएगा, वो थोड़ा लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से यू नो एक्सप्रेशन, डीएनए एक्सप्रेशन, इट विल बी ईजियर। तो हिस्टोन एसिटाइलेशन में देर इज रिमूवल ऑफ हिस्टोन्स पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट देर इज रिलैक्स्ड डीएनए कॉइलिंग। कॉइलिंग की जो जितनी टाइट कॉइलिंग होती है उतना इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी एक्सप्रेस्ड। तो पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा, अट्रैक्शन कम होगी, डीएनए कॉइलिंग रिलैक्स हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाएगी। Thyroid hormone synthesis is altered by acetylation of thyroid hormone receptor. This you need to keep in mind. So histone acetylation makes DNA active, A for acetylation, A for active. Histone deacetylation. Removal of acetyl groups tightened DNA coiling. Uh, जब एसिटाइल ग्रुप्स रिमूव कर देते हैं हम, तो क्या होता है कि डीएनए कॉइलिंग टाइटन हो जाती है, डीएनए और टाइटली पैक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होना इट बिकम्स डिफिकल्ट। हिस्टोन डीएसिटाइलेशन may be responsible for altered gene expression in Huntington disease. So हंटिंगटन डिजीज में डीएसिटाइलेशन की वजह से जीन एक्सप्रेशन ऑल्टर हो जाता है। हिस्टोन डीएसिटाइलेशन डीएक्टिवेट्स डीएनए. So you can see D for deacetylation and D for deactivation.
Then we see the structure of nucleotides. So basically, what are nucleotides? Nucleotides are the building blocks of DNA and RNA, as we already know. Nucleotides are composed of ribose sugar, nitrogenous bases, and phosphate groups. Now, uh, there is a difference between nucleoside and nucleotides. Nucleoside is just the base and the ribose sugar. It may be deoxyribose or ribose. And nucleotide is formed when the phosphate groups also combine with the bases and the sugar. So nucleotide involves base, ribose, and or deoxyribose and the phosphate groups linked by 3,5 phosphodiester bond. What is the purpose of the incoming phosphate? It is the energy source for the bond. So 5 prime end of the incoming nucleotide, it bears the triphosphate, which is the energy source for the bond. So there are three components basically in nucleotides. Now we see the nitrogenous bases. They are purines and pyrimidines. Purines include adenine and guanine, and purines uh, have a double ringed structure. You can see right over here, these are two separate rings, whereas the pyrimidines, which include cytosine, thymine, and uracil, they consist of a single ring. They are single ringed structures. So the mnemonic is pure as gold, P for pure goes for purines, and A for adenine, G for guanine. Another mnemonic, cut the pyramid. Pyrimidines include cytosine, uracil, thymine. Thymine has a methyl group. This needs to be kept in mind. Then they say that the CG bond has three hydrogen bonds, and the CG bond is stronger than the AT bond. Uh, AT bond is formed between adenine and thymine and consists of two double bonds. Let me tell you. Cytosine and guanine, they have three double bonds, right? Whereas adenine and um, thymine have two double bonds, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है उनको ब्रेक करने के लिए. सो मोर टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सी जी बॉन्ड्स. सो there is increased melting temperature of DNA when the 3C content is greater. So CG bonds are like crazy glue. This you can remember while इस मिसाल से आप इसको याद रख सकते हैं. तो देन दे से कि डीएमाइनेशन रिएक्शंस की वजह से स्ट्रक्चर्स चेंज होके नए स्ट्रक्चर्स बता देते हैं. साइटोसिन डीएमाइनेशन के थ्रू यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है. एडेनिन हाइपोजैंथीन में कन्वर्ट हो जाता है. गुआनिन कन्वर्ट्स इनटू xanthine and 5-methyl cytosine converts into thiamine. Then they say what are the amino acids which are necessary for purine synthesis? They include glycine, aspartate, and glutamine. Um, you can memorize it through BRAG, right? And they say uracil is found only in RNA. तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप इसको uracil is not a part of DNA. It is found in only in RNA, and thiamine is found in DNA specifically. एंड यूरेसिल और थायमीन के स्ट्रक्चर में बस ये डिफरेंस है कि जब हम यूरेसिल की मिथाइलेशन कर लेते हैं तो इट फॉर्म्स थायमीन. So that's it for today, and in the next lecture we'll be going through the de novo pyrimidine and purine synthesis.